Landslides, droughts, etc. have the potential to greatly disrupt people's lives due to the extensive damage they inflict. INSAT-3DS is a state-of-the-art meteorological satellite developed by ISRO and disaster warning with state-of-the-art meteorological payloads. It is configured with 4 payloads such as imager, sounder, data relay transponder and satellite-aided search and rescue system. Improvements are carried out in the INSAT-3DS imager and sounder payloads for better meteorological products and increased imaging throughput. INSAT-3DS is designed on ISRO's reliable I2K bus platform with necessary modifications to fulfill the unique demands of the mission. The data from INSAT-3DS satellite will help to predict short-range weather forecasts for extreme events such as heavy rainfall, thunderstorms, fog detection, visibility estimation to help the aviation industry. Additionally, INSAT-3DS will provide information about forest fire, smoke, snow cover, ocean, climate studies, identification of potential fishing zones, etc. The satellite will be placed in a geostationary orbit and the mission life will be around 10 years. The data from INSAT-3DS will be disseminated to the user community through the Multi-Mission Data Receiving and Processing System. The mission INSAT-3DS is fully funded by the Ministry of Earth Sciences. The Geosynchronous Satellite Launch Vehicle GSLV-F14 will launch the satellite from the second launch pad of the Spaceport of India, SDSC Shar, Sriharikota. The vehicle consists of 3 stages. The first stage is made up of 4 liquid strap-on boosters and a solid rocket motor at the core. The second stage of the vehicle is equipped with liquid propellant and the indigenous cryogenic upper stage forms the third and final stage of the vehicle. Additionally, the vehicle's payload fairing features a 4-meter diameter Ojai version. The addition of INSAT-3DS to India's space program will greatly enhance our ability to observe, understand and forecast weather patterns. That was a curtain raiser regarding GSLV-F14 INSAT-3DS mission. The satellite INSAT-3DS is a meteorological satellite intended to be placed in geostationary orbit, wherefrom it will have a continuous visibility over the Indian subcontinent region. It will be augmenting the meteorological services along with the presently operational INSAT-3D and INSAT-3DR in orbit satellites. Normalcy of all 4 PSBTs. Copied. GSLV-F12 के प्रमोशन की उल्टी गिनती 27.5 घंटे पहले पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान यान के सभी तंत्रों को पावर ऑन कर सुदूर स्थल से इनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। क्रमबद्ध तरीके से यान में तरल नोदक की स्थिति प्राप्त कर भराव पूर्ण कर लिया गया है। यह गतिविधियां पूर्ण सुरक्षा तथा गुणवत्ता के साथ ध्यान में रख के की जाती हैं। Okay, now BIU in ALS mode. Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready. Roger. Telemetry can start storage. Vehicle director, all stack elements are ready to support GSLV-F14 INSAT-3DS mission launch. GSLV-F14 कुल ऊंचाई 51.7 मीटर की होती है। Telemetry can start storage. Number 503. Storage started at VLCC. काउंटडाउन के दौरान स्पेसक्राफ्ट को भी पावर ऑन किया जाता है तथा सभी संचार तंत्र, सेंसर्स, बैटरी जैसे अनेक तंत्रों की जांच की जाती है। इस दौरान
एक सुरक्षा टीम भी यहाँ जांच के लिए जाती है लॉन्च पैड Event पर, number 510 completed. ताकि इसे पूर्णतः खाली कर दिया गया और यह पूरी तरह सुरक्षित है प्रमोशन के लिए। ROD to Mission Director, range is ready for GSLV-F14 INSAT-3DS launch. Mission Director Roger. TTC Director. सभी तंत्रों की तैयारियों की सूचना अभी मिशन निदेशक को दी जा रही है। GSLV-F14. अभी अभी हमने रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर को देखा। Director Roger. Satellite Director to Mission Director, INSAT-3DS spacecraft is ready for the launch of GSLV-F14 INSAT-3DS mission. Mission Director Roger. Timing to control, timing confirms external hold mode. Roger, VLCC and LCC2 to note, timing confirmed external hold mode. VLCC Roger. LCC2 Roger. T minus 19 minutes. सभी तंत्र जैसे यान, उपग्रह, रेंज ऑपरेशन तथा टेलीमेट्री ट्रैकिंग, इन सभी के निदेशक अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को देते हैं। This is Mission Director. और अब Mission Readiness Review and Launch Authorization Board has already given clearance for proceeding with the countdown and launch of GSLV-F14 INSAT-3DS mission. All operations till the automatic launch sequence has been completed satisfactorily. Based on clearance obtained from vehicle, spacecraft, range and east-track stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorized to initiate the launch operation sequence for the launch of GSLV-F14 INSAT-3DS mission at 17 hours 35 minutes IST today, that is 17th of February 2024. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of GSLV-F14 INSAT-3DS mission. अभी अभी आपने सुना TC मिशन निदेशक श्री टॉमी जोसेफ ने सभी तंत्रों की सूचना प्राप्त कर GSLV-F14 INSAT-3DS मिशन के ALS शुरू करने के लिए अनुमोदन दे दिया है। Based on the confirmation that all the participating agencies are ready for the launch, you have watched the Mission Director Shri Tommy Joseph authorizing the launch. The ALS or the automatic launch sequence are a capsule of very essential verifications of the launch vehicle systems whose correct performance is imperative for a successful launch. Few minutes before the launch, the onboard computers will take over from the ground computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है तथा आंतरिक जांच जारी है। इसके पूर्ण होते ही यान के प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा और इस दौरान सभी तरल ईंधन वाले इंजन्स की जांच होती है। ठोस नोदक के इग्निशन कमांड को आम कर दिया गया है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर को फ्लाइट मोड में डाल दिया गया है। अंतिम कुछ मिनटों में प्रथम चरण के साथ L40 इग्निशन, क्रायो आर्म, लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सिस्टम, इन सबको सक्षम कर दिया जाएगा। प्रमोशन में सर्वप्रथम हम देखेंगे T-4.8 सेकंड्स पर L40 जो कि तरल नोदक पर आधारित 4 स्टेप ऑन इंजन हैं, उनका प्रज्वलन शुरू होगा। L40 के प्रज्वलन शुरू होते ही इसमें पर्याप्त दबाव सुनिश्चित किया जाएगा और तभी लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सिस्टम को मुक्त किया जाता है और GSLV-F14 मुक्त होगा प्रमोशन के लिए। और उस समय T0 पर ही कोर बूस्टर S139 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। Launch operation of hydrogen tank commenced. SDA servers activated. ALS Roger. Data from SHAR-1 and SHAR-2. Countdown for GSLV-F14 INSAT-3DS mission commenced 27.5 hours before the scheduled launch time. During the countdown, the launch vehicle is powered on for checking Automatic the launch health. sequence initiated for GSLV-F14 launch.
It is about T minus 15 minutes, and confirmation is announced for the start of automatic launch sequence. During the countdown, the launch vehicle is powered on for checking the health of its various systems. The stage tanks are serviced with propellants. Gas bottles are charged and pressurized to their specified values. T minus 15 minutes. Health of spacecraft is checked. Meanwhile, range tracking systems verify their functionality. About 5 hours ahead of launch, liquid hydrogen is serviced, and T minus 2.5 hours, liquid hydrogen is serviced into the stage tanks. मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रमोशन के लिए, तापमान 30 डिग्री से कम, वायु गति भी पूरी तरह अनुकूल है। यहाँ विजिटर्स गैलरी में काफी मात्रा पर छात्र छात्रा यहाँ उपस्थित। अभी आप फिलिंग कंट्रोल सेंटर को देख रहे हैं। T minus 14 minutes. इनसेट 3DS उपग्रह को कुल भार 2274 किलोग्राम है। इसे पृथ्वी की 170 किलोमीटर की उपभू तथा 37,682 किलोमीटर की अपभू कक्षा में 19 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाएगा। इनसेट 3DS भूस्थिर कक्षा में तीसरी पीढ़ी का मौसम विज्ञान का एक अनुवर्ती मिशन है। GSLV-F14 इनसेट 3DS मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। इसे मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और समुद्री सतहों के संवर्धित मौसम विज्ञान प्रेक्षण और निगरानी के लिए निर्मित किया गया है। यह उपग्रह वर्तमान में प्रचालनरत इनसेट 3D और इनसेट 3DR के साथ मौसम विज्ञान सेवाओं में वृद्धि करेगा। As we wait for the launch, up next is the integration video for GSLV-F14 INSAT-3DS mission. The integration of the rocket that took place in SDSC Shar is brought to you. अभी आप देख रहे हैं यह प्रथम चरण के कोर बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट सबसे निचला भाग है। इसे सावधानी पूर्वक मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रख दिया गया है और इसके ऊपर की ओर आ रहा है। यह मिडिल सेगमेंट है। यह प्रथम चरण का कोर बूस्टर कुल 5 भागों में बनाया जाता है। यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है। यह तीसरा मिडिल सेगमेंट रख दिया गया और यह अंत में सबसे ऊपर की ओर हेड एंड सेगमेंट है। बड़ी सावधानी और गुणवत्ता सुरक्षा सभी को ध्यान में रखकर यह काम किया जाता है। यह इग्नाइटर है जो कोर बूस्टर को प्रज्वलित करता है। यह इंटर स्टेज प्रथम तथा द्वितीय चरण के बीच में जो इंटर स्टेज है इसे भी समायोजित कर दिया गया है। और यह आप देख रहे हैं L40 तरल नोदक पर आधारित स्ट्रैप-ऑन बूस्टर। यह भी कोर बूस्टर के साथ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाकर सावधानी पूर्वक संयोजित कर दिया जा रहा है। इस तरह कुल 4 L40 स्टेजेस में लगेंगे। तरल नोदक पर आधारित यह L40 UH-25 तथा N2O4 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर विकास इंजन का प्रयोग करता है और यह है द्वितीय चरण GS2 के नाम से हम जानते हैं। Visuals from the vehicle assembly building that stands 18 stories tall. You have watched the integration of the first stage, the core stage, and the 4 liquid strap-ons. And this is the second stage called the GS2. And then the third stage, the cryo stage, which operates on liquid hydrogen and liquid oxygen, being prepared in its integration building.
and brought to the vehicle assembly building as a single unit for integrating with the launch vehicle. This is the equipment bay being hoisted very carefully and being placed on the cryo stage, upon which the satellite encapsulated assembly will sit. And these are the visuals from the clean room at the satellite preparation facility. The INSAT-3DS satellite getting ready to be assembled. यह 3D INSAT 3DS उपग्रह है जो पूर्ण समायोजित होकर परीक्षित होकर यहाँ समायोजन के लिए लाया गया है। परीक्षण के पश्चात यहाँ इसे पेलोड एडेप्टर के ऊपर समायोजित कर ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया जाएगा। That's the integration of the satellite with payload adapter, and then the closure of the two halves of heat shield or the payload fairing as it is called. It will now be moved from the satellite preparation facility to the vehicle assembly building. यह ओजिव आकार का ऊष्मा कवच है जो कि वायुगतिक के दौरान स्थिरता बनाए रखता है। The final movement of the rocket, all decked, all ready, towards the launch pad, where it will occupy few days for its preparation, waiting for the launch. Now this is the visual from the second launch pad, majestic view. यहाँ पूर्ण संयोजित GSLV-F14 लॉन्च व्हीकल दृढ़ता से लॉन्च पैड पर खड़ा हुआ, अपने अंतिम जांचों के पश्चात प्रमोशन के लिए तैयार और अपने मिशन के लिए तैयार। सभी यहाँ उत्सुक प्रमोशन को देखने के लिए। T-8 minutes. For the GSLV launch, there are two major launch critical ground systems at the launch pad. The re-engageable launch hold and release system, RELHRS, ensures that the launch vehicle is held on the pedestal against disturbing forces during the strap-on engine startup and thrust buildup. And the pair of cryo arms which support the heavy vacuum insulated hoses for the servicing of LOX and LH2 from umbilical tower to the launch vehicle. This one separates and swings out milliseconds after liftoff sensing. इस प्रमोशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। यहाँ उल्टी गिनती करते हुए T-4.8 सेकेंड्स पर तरल नोदक वाले 4 L40 स्ट्रैप-ऑन का प्रज्वलन शुरू होगा। उचित दाब की प्राप्ति होने पर LHRS लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सिस्टम T-7 minutes को मुक्त कर दिया जाएगा और तभी T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। इस समय प्रमोशन यान का प्रमोशन होगा और प्रमोशन मंच से उत्थापित होगा। प्रथम चरण लगभग 110 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 40 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा, लेकिन L40 स्टेज 148 सेकंड तक प्रज्वलित रहेंगे। अब यान की ऊंचाई 70 किलोमीटर की होगी, तब प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस यान में द्वितीय चरण का प्रज्वलन पहले शुरू हो गया और पृथक के तुरंत बाद ही द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाता है। इसे हम हॉट सेपरेशन कहते हैं। अब यान 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2.28 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ अपने यात्रा जारी रखेगा और द्वितीय चरण का प्रज्वलन के 24 सेकंड के पश्चात 110 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण अपना कार्यकाल 141 सेकंड का पूरा कर यान को 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा तथा यहां पर सापेक्ष गति होगी 4.76 किलोमीटर प्रति सेकंड। तत्पश्चात GS2 यानी द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। यह पूरा काम ऑन बोर्ड कंप्यूटर द्वारा संपन्न किया जाता है। द्वितीय चरण के अलग होने के 1 सेकंड पश्चात ही सबसे जटिल इंजन वाले क्रायो इंजन का प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा।
यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन पर आधारित क्रायो चरण है। यह वह अंतिम चरण है जो इनसैट 3DS उपग्रह को करीबन 827 सेकंड प्रज्वलित रहकर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा। We are 5 minutes away from the launch, and while we wait for the launch to take place, let me appraise the viewers regarding the burn-in staging events expected to take place for the nominal flight of GSLV-F14 INSAT 3DS mission. System performance is normal. The 4 strap-on stages, the L40s, will ignite first, and 4.8 seconds later, after ensuring their full thrust, the core S139 ignites. Ignition of S139 coincides with the T0 or liftoff. All the 5 engines develop thrust simultaneously. At 110 seconds into flight and 40 kilometers altitude, S139 burns out and L40 stages continue to develop power till 148 seconds. Though the first stage completes its operation, the staging of first stage is typical hot separation, wherein the second stage, GS2, ignites before the separation of GS1. By now, the rocket is at 70 kilometers altitude. T-minus 4 minutes. The burn time of GS2 is 141.4 seconds. By the time the stage completes operation, an altitude of 130 kilometers would have been achieved. During the operational regime, the rocket clears. तेबे आरंभ हो जाइछि काउंटडाउन सेही स्वर्णिम मुहूर्त को पूरा भारतवासींकर अपेक्षा रहितिला। पूरा भारतवासी कहीं कहवा को जदि चाहिबी समग्र विश्व को यही स्वर्णिम मुहूर्तर अपेक्षा रही। वर्तमान इसरो ता इतिहास रे आउ एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ी देबा को जाउछि। अपेक्षा सेही मुहूर्त को जो मुहूर्त लिपिबद्ध हेबो वर्तमान इसरो इतिहास रे। अगणित दर्शक उपस्थित अछंती श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर निकट रे जेतेबेले आउ किछि समयर अपेक्षा रही। काउंटडाउन आपण माने टेलीविजन स्क्रीन देखि पारुछंती। आपणकर सीधा सड़क चित्र देखि पारुछंती न्यूज 8 माध्यम रे। अगणित दर्शक मध्य सतीश धवन स्पेस सेंटर निकट रे उपस्थित अछंती। सेमाने व्यक्तिगत भाव में सेठारे उपस्थित अछंती निज स्वचक्षु रे देखिबाकू से मुहूर्त को निज आखिरे कैप्चर करनेबाकू सबुदिन पई कैद करदेबाकू सेठारे उपस्थित अछंती। पुणी इतिहास रचिबाकू जाउछि इसरो। आउ मात्र किछिटा मुहूर्त को अपेक्षा जहार ताजा सीधासलख चित्र आपण माने न्यूज 8 माध्यम रे देखि पाउछंती। महाकाश को पुणी एक सैटेलाइट पठाउछि इसरो। पाणीपाग सैटेलाइट इनसैट 3DS एही स्वर्णिम युगर आरंभ करिबो। तेबे उत्क्षेपण पाई समय सरी सरी आसुछि। समस्त मनरे से व्यग्रता से उत्कंठा संपूर्ण भाव में बारी हुई पड़ुछि। दीर्घ दिन परिश्रम वर्तमान सार्थक हेबाकू जाउछि। लोकंको मध्यरे उत्कंठा मध्य बेस देखिबाकू मिलुछि। किभଳି भाବରେ ସେମାନେ उत्साहित अछंती निज स्वचक्षुरे देखिबाकू जाउछंती सैटेलाइट इनसैट 3DS रो उत्क्षेपणर ताजा चित्र को आमे मध्य आपण मानकू देखाउछु न्यूज 8 माध्यम रे। सेही स्वर्णिम मुहूर्त आउ किछि समय अपेक्षा रही। पूरा विश्ववासी नजर वर्तमान टेलीविजन स्क्रीन उपर रही। केतेबेले पुणी थरे इसरो इतिहास रचिबो। इसरो पृष्ठारे आउ एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ी होइचिबो। आपण माने सीधा सड़क चित्र देखि पारुछंती किभଳି भाबरे सेठारे उपस्थित दर्शक माने करताली सहित किभଳି भाबरे निजको उत्साहित करुछंती से मुहूर्त को एन्जॉय करुछंती जेतु से माने सेठारे उपस्थित अछंती। किंतु ए परिचय देखिबा आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर रे वर्तमान जो साइंटिस्ट माने उपस्थित अछंती जो वैज्ञानिक माने अछंती
सेमानकर मन केते भाराक्रांत रही उत्कंठा तो रही ता सहित मनर व्यग्रता मध्य स्पष्ट भाव में बारी होई पड़छि आउ किछि सेकेंड रो मुहूर्त को अपेक्षा तेबे GSLV-F14 रॉकेट साहाय्य एहाको निर्धारित कक्षपथरे अवस्थापित करा जिवो वर्तमान से समय उपस्थित रही आपण माने देखि पाउछंती वर्तमान सेही स्वर्णिम मुहूर्त उपस्थित हो जाइछि वर्तमान INSAT-3DS उत्क्षेपण हो जाइछि से स्वर्णिम मुहूर्त आमे स्वचक्षुरे वर्तमान देखि पाउछंती सेटारे उपस्थित अगणित जनता अगणित दर्शक मध्य से दृश्य को उपभोग करि पारंती आमे मध्य न्यूज़8 माध्यम रे आपण मानको सीधा सड़क भाव से ही विजुअल देखाउछु से ताजा चित्र देखाउछु जो चित्र एक इतिहास रचिब एही स्वर्णिम मुहूर्त वर्तमान इतिहास रचिब इसरो पृष्ठारे एक स्वर्णिम अध्यायर आरंभ होईछि एही उत्क्षेपण माध्यम रे सैटेलाइट INSAT-3DS उत्क्षेपणर सीधा सड़क चित्र वर्तमान आपण माने आपणक टेलीविजन स्क्रीन रे न्यूज़8 माध्यम रे देखि पारुछंती ए हेउछि सही सुंदर चित्र जहाकू अपेक्षा रहितिला महाकाश को पुणी एक सैटेलाइट पठाउछि इसरो वर्तमान ए हेउछि सेही सैटेलाइट रो चित्र जहा वर्तमान उत्क्षेपण होई सारिछि पाणीपाग सैटेलाइट INSAT-3DS रो उत्क्षेपणर सीधा सड़क चित्र आपण माने न्यूज़8 माध्यम रे देखि पारुछंती ये सुंदर मुहूर्त को समस्तंकर अपेक्षा रहितिला ए सुंदर चित्र को निज कैमरा लेंस से कैद करबा को बा कैप्चर करबा को समस्तंकर अपेक्षा रहितिला वर्तमान से समय उपनीत होईछि आमे देखि पारुछंती किभली भाबरे द्रुत गति रे INSAT-3DS आगु को आगु गति करूछि एही सैटेलाइट को जदि देखिबा स्पेस एजेंसी रो नॉटी बॉय बोली मध्य कहा जाउछि तेबे पूर्व निर्धारित समय अनुसार आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर रु पूर्व निर्धारित समय अनुसार 5:35 रे एहार उत्क्षेपण सफल होईछि आपण माने सेही चित्र वर्तमान देखि पारुछंती वर्तमान तार ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मध्य आपण माने आपन टेलीविजन स्क्रीन रे देखि पारुछंती किभली भाबरे रॉकेट उत्क्षेपण करा जायछि INSAT-3DS रो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपण वर्तमान देखि पारुछंती आपण टेलीविजन स्क्रीन रे हम माने देखौछु आपण को न्यूज़8 माध्यम रे GSLV-F14 रॉकेट साहाय्य रे एहाको निर्धारित कक्षपथरे वर्तमान अवस्थापित करा जिवो तेबे एही सैटेलाइट पाणीपाग पूर्वानुमान एवं विपर्यय संपर्कित आगुआ सतर्क सूचना देबारे बेस सहायक हेबो बोली आम भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो दाबी करिछि तेबे केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पक्षरु एही सैटेलाइट तयारी करा जायतिबा सूचना रहिछि INSAT-3DS हेउछि इसरो जियो स्टेशनरी कक्षपथ स्थानित हेबाक थिबा पाणीपाग उपग्रह एहा जदि देखिबा थर्ड जनरेशन रो एक नुआ मिशन बोली मध्य कहि परिबा आपण मान देखि पारुछंती किभली आबरे ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखा जाउछि आमे वर्तमान टेलीविजन स्क्रीन रे देखि पारुछंती तार सीधा सड़क चित्र केते उत्कंठा केते व्यग्रता रो सहित वैज्ञानिक माने अपेक्षा करी बसिछंती अपेक्षा रे रहिछंती यार उत्क्षेपण तो होई सारिछि ता परे भी तार अग्रगति नै मनरे संदेहान सहित उत्कंठा बरी रहिछि वर्तमान देखि परछंती आपण मानक टेलीविजन स्क्रीन रे किभली भाबरे तार गति रहिछि तार गतिपथ रहिछि ए गतिपथ को वर्तमान ग्राफिकली देखा जाउछि आमे माने देखि परछंती हमर टेलीविजन स्क्रीन रे न्यूज़8 माध्यम रे आपण माने देखि परछंती वर्तमान किभली भाबरे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रही किभली भाव तार गतिपथ रही किभली भाव एहा उत्क्षेपण हेबा परे किभली भाव तार गतिपथ रही से चित्र सीधा सड़क आमे देखे छुआपण को वर्तमान न्यूज़8 माध्यम रे तेबे एहारी सहित कोना कोटी इतिहास रचिछि इसरो एहार ताजा सीधा सड़क चित्र आपण माने देखि पारुछंती आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर रु केते उत्कंठार सहित केते व्यग्रतार सहित करताली सहित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में से ट्रैक करते हुए सेंटर उपस्थित समस्त वैज्ञानिक
यह सहित अगणित दर्शक जो मैंने टेलीविजन स्क्रीन माध्यम देखुं चित्र को निज भारत माटीर ये गौरव पाई निजको ना कोटि गौरवान्वित निहाती भाव मन करुछंती। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर पूर्व निर्धारित समयसूची 5:35 यार उत्क्षेपण होईछि। वर्तमान यह तार गतिपथ रे आगे चली GSLV-F14 रॉकेट साहाय्य यहाकू निर्धारित कक्षपथ रे अवस्थापित कराजिबो जहा सूचना रही। उत्साहित अछंती सेंटर समस्त वैज्ञानिक उपस्थित। INSAT-3DS रो सफल उत्क्षेपण होईछि जहाकू नै खुशी व्यक्त करुछंती मध्य सेठारे उपस्थित समस्त वैज्ञानिक गण। यह आम भारत पाई एक गर्व और गौरवर समय। सतीश धवन स्पेस सेंटर बाहर मध्य अगणित दर्शक उपस्थित अछंती जो माने करताली सहित निजे उत्साहित होउछंती। भारत को गौरवान्वित करितिबा इसरो पाई करताली देउछंती। ए सुंदर मुहूर्त ए स्वर्णिम मुहूर्त को समस्ते निज निज आखिरे कैद करने को अपेक्षा बसीथिले। दीर्घ समय धरी अपेक्षा रही से अगणित जनता से अगणित दर्शक। वर्तमान उत्क्षेपण हो सारी पाणीपाग सैटेलाइट INSAT-3DS जहाकू नहीं अपेक्षा रही। वर्तमान ताहार ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपण माने देखि पारुछंती। उपस्थित अछंती अनेक स्कूल रु मध्य पिला माने आसिछंती सम्मिलित होइछंती। सीधा सड़क भाव में ए दृश्य को उपभोग करुछंती। ए दृश्य को उत्कंठार सहित देखुछंती। ए होछि INSAT-3DS रो चित्र आपण माने देखि पारुछंती आपण को टेलीविजन स्क्रीन रे। वर्तमान किभली भाव में तार गतिपथ रही। जहाँ पूर्वर निर्धारित करा जाइतिला केउ भली भाव में यह तार गतिपथ रखिबो केउ भली भाव में यह निर्धारित स्थान रे निर्धारित कक्षपथ अवस्थापित होइबो सेही अनुसार तार गतिपथ उपर नजर रखिछंती आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर समस्त वैज्ञानिक माने। तेबे GSLV-F14 रॉकेट साहाय्य यहाकू निर्धारित कक्षपथ रे अवस्थापित कराजिबानी सूचना रही। एही सैटेलाइट रो जदि कार्य कोन आमे देखिबा ए सैटेलाइट पाणीपाग पूर्वानुमान एवं विपर्यय संपर्कित आगुआ सतर्क सूचना देबारे बेस सहायक हेबो। एहा द्वारा आमे आम पाणीपाग को नै बदलुथिबा पाणीपाग किंबा विपर्यय संपर्कित आगुआ सतर्क होई परिबा। एहा उची से मुहूर्त जोंटी उपस्थित अछंती अगणित वैज्ञानिक मध्य उपस्थित अछंती। सेमान देखुछंती किभली भाबरे INSAT-3DS उत्क्षेपण परे तार केउ भली भाबरे तार गतिपथ रखिछि। सफलतार सह INSAT-3DS तार गतिपथ रे आगे चलीछि। तथापि मनरु सरुनी उत्कंठा मनरु सरुनी व्यग्रता। सफल भाव उत्क्षेपण हेबा परे यह किभली भाव में कक्षपथ अवस्थापित हेबो से नै मध्य कोंटा कोठी चिंता मन रे रहिथिबा स्पष्ट देखिबा को मिलुछि। तेबे जो देखिबा इसरो एक नुआ इतिहास रचिछि। INSAT-3DS रो उत्क्षेपण सहित इतिहास रचिछि इसरो जार ताजा सीधासलख चित्र आपण माने वर्तमान न्यूज 8 माध्यम रे देखि पारुछंती। ग्राफिकली तार प्रेजेंटेशन वर्तमान देखिबा को मिलुछि किभली भाव में से तार गतिपथ रे सफलतार सह आगे चलीछि। INSAT-3DS महाकाश को पुणी एक सैटेलाइट पठाइछि इसरो। मुख्यतः यार काम उपर जदि आमे देखिबा एही सैटेलाइट पाणीपाग पूर्वानुमान एवं विपर्यय संपर्कित आगुआ सतर्क सूचना देबारी बेस सहायक हेबो। एभली किछि दाबी करिसेंती भारतीय महाकाश गवेषणा संस्थार वैज्ञानिक माने। तेबे केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पक्षरु एही सैटेलाइट तैयारी करा जाइथिबा जणा पड़छि। INSAT-3DS हेउछि इसरो जिओस्टेशनरी कक्षपथ रे स्थानित हेबाकु थिबा पाणीपाग उपग्रह।
तृतीय पीढ़ीर यह नुआ मिशन। तेबे इसरोर कहवा अनुसार जिओ स्टेशनरी कक्षपथ पहुंचवा पर यह उपग्रह सहजरे पाणीपाग संबंधी सूचना देवा सह पाणीपाग बाबद पूर्वानुमान करिबारे मध्य सफल हेबो। देखिपारुचंती वर्तमान सही चित्र ताजा चित्र किभली भाबरे लोकंक मध्य उत्साह भरी रही निजको निजे उत्साहित करुचंती देश पाई निजको गौरवान्वित मन करचंती आ ए समस्त खुशीर मुहूर्त सेमानक मनरे सेमानक जीवन रे भरी देइछि। वर्तमान इसरो गोटे परे गोटे नुआ अध्याय नुआ स्वर्णिम अध्याय कहले भूलेब नहीं नुआ स्वर्णिम अध्याय जोड़ी चली भारत इतिहास रे इसरो। चंद्रयान 3 सफल उत्क्षेपण कथा कहवा आदित्य L1 सूर्य मिशन कथा कहवा वर्तमान INSAT-3DS उत्क्षेपण कथा कहवा गोटे परे गोटे सुंदर भाव स्वर्णिम अध्याय भेटी देउछि इसरो। ए सैटेलाइट को स्पेस एजेंसी रो नॉटी बॉय बोली मध्य कहुछि। तेबे आपण माने देखि पारुछंती वैज्ञानिक माने किभली भाबरे उपस्थित अछंती दर्शक माने उपस्थित अछंती देखुछंती सही चित्र को सैटेलाइट रो उत्क्षेपण रो से मुहूर्त को जहा आम आखि सामना तो बहुत दूर को चली जाइछि जहा को खाली आखिरे आउ देखिबा संभव नुहे तार ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वर्तमान आमे देखि पारुछंती टेलीविजन माध्यम रे केते उत्कंठा केते व्यग्रतार सहित वर्तमान इसरो मुख्य आपण देखि पारुथिबे आपण टेलीविजन स्क्रीन रे किभली भाबरे अपेक्षा रे रहिछंती एहार गतिपथ नै एहार अग्रगति नै एहा किभली भाबरे सफलतार सह गति करुछि तार कक्षपथ रे एहा तार गतिपथ रे किभली भाबरे आगकु चलीछि सफलतार सह तार गतिपथ रे आगकु जाउछि ना कोनोसी प्रकार बाधा विघ्न को सामना करिवो कि एभली मध्य कोना कोठी मनरे संदेहान सृष्टि होउछि किंतु समय जेते जेते गड़ी गड़ी जाउछि INSAT-3DS तार गतिपथ रे सफलतार सह आगकु माड़ी चलीछि एहाकु देखि कोना कोठी समस्ते उत्साहित अछंती। वर्तमान से मुहूर्त आपण माने देखि पारुछंती आपण टेलीविजन स्क्रीन रे आमे देखाउछु न्यूज 8 माध्यम रे पाणीपाग सैटेलाइट INSAT-3DS उत्क्षेपण पई समय सरी सरी आसुछि। तेबे उत्कंठार समय सरी जाइछि उत्क्षेपण काम सरीछि तेबे INSAT-3DS आखि सामनारू बहुत दूर को चली जाइछि जार अपेक्षा रही सही स्वर्णिम इतिहास रचि सारी वर्तमान इसरो GSLV-F14 रॉकेट साहाय्य एहाकु निर्धारित कक्षपथ रे अवस्थापित करा जाइछि। वर्तमान से सुंदर मुहूर्त आम देखि पारुछंती से सुंदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आम आखि सामनारू बहुत दूर को चली जाइथिले मध्य वर्तमान तार किभली भाबरे गति रही तार केउ भली भाबरे गतिपथ रे से आगु जाउछि तार ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मध्य इसरो पक्षरु सर्वसाधारण पई जारी करा जाइछि टेलीविजन माध्यम रे आमे सीधा सड़क सही ग्राफिकल चित्र को देखि पारुछंती। आज इसरो पाई एक महत्वपूर्ण इतिहास सृष्टिकारी दिन तेरे पूर्व निर्धारित समय जहाँ रही 5:35 रे विशाखापट्टनम श्रीहरिकोटारू यह उत्क्षेपण करा जाइछि। तेबे एथिरु भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था को 3टी बड़ उपलब्धि निहाती भाव हासिल होउछि। यह जदि कहवा GSLV 16तम एवं स्वदेशी क्रायोस्टेज 10म उड़ान स्वदेशी क्रायोस्टेज यह 7तम ऑपरेशनल उड़ान तेबे भूपृष्ठ समुद्र पाणीपाग और आपातकाल सिग्नाल सिस्टम यह तथ्य प्रदान करिबो। INSAT-3DS यार मुख्य कार्य जदि देखिबा यार मुख्य उद्देश्य देखिबा भूपृष्ठ समुद्र पाणीपाग और आपातकाल सिग्नाल सिस्टम यह सठिक तथ्य प्रदान करिबो। यह हेउछि एही उपग्रहर मुख्य उद्देश्य।
तेज GSLV-F14 रॉकेट INSAT-3DS सैटेलाइट को उत्क्षेपणर प्राय 18 मिनिट पर निर्धारित कक्षरे पहुंचाइब। तेबे से समय मध्य उपस्थित हो जाइछि जहा उपरे समस्त नजर होइतिला जो वैज्ञानिक माने मध्य व्यग्रतार सहित उत्कंठार सहित से समय को अपेक्षा कर रहिछंती जहा सूचना रहितिला जे GSLV-F14 रॉकेट INSAT-3DS को उत्क्षेपणर प्राय 18 मिनिट पर निर्धारित कक्षरे पहुंचाइब। वर्तमान से समय से चित्र को आपण माने देखि पारुछंती तार गतिपथ सैटेलाइट गतिपथ किभଳି रहिछि वर्तमान से केउ स्थान दे गति करुछि तार गतिपथ किभଳି रहिछि ताहाको ग्राफिकली प्रेजेंट करा जाउछि। वर्तमान आर्थ साइंस मंत्रालय एहार निर्माण लागि पांठी प्रदान करिछि। एहार चारित्रिक गठन जदि देखिबा एथिरे 6टी चैनल इमेज रो और 19 चैनल साउंड रो मेटेरोलॉजी पेलोड लागिछि। तेबे INSAT-3 सीरीज रो सैटेलाइट रे पूर्वरु 6टी भिन्न भिन्न प्रकार जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहिछि। INSAT-3DS सप्तम सैटेलाइट INSAT सीरीज पूर्वरु समस्त सैटेलाइट को 2000 रु 2004 मसिया मध्यरे लॉन्च करा जाइतिला। सेगुडिक जरिया संचार टीवी ब्रॉडकास्ट और पाणीपाग संबंधी तथ्य मिल पारुथिला। वर्तमान एही INSAT-3DS माध्यम रे आमे आउ टिके एडवांस होई पारिछंती आमे आउ टिके आगु को बढ़ी पारिछंती। भूपृष्ठ समुद्र पाणीपाग व आपातकाल सिग्नाल सिस्टम रो तथ्य प्रदान करिबा लक्ष्य नै निज गतिपथ रे आगु को माडी चलीछि INSAT-3DS। प्रत्येक मुहूर्त वर्तमान वैज्ञानिक मानक पई उत्कंठार समय प्रत्येकटी सेकेंड से मानक मनरे व्यग्रता सृष्टि करुछि। जो उद्देश्य नै एहाकू महाकाश उत्क्षेपण करा जाइछि से उद्देश्य रे एहा केते सफल रहिबो से व्यग्रता मनरे भरी रहिछि। Observation satellite INSAT-3DS in geosynchronous transfer orbit, whose perigee is 170 kilometers and apogee is 37,682 kilometers. Cryostage performance normal. The relative velocity acquired presently is 9.28 kilometers per second. कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे तृतीय चरण के कार्यकाल को समाप्त कर इसे बंद कर दिया जाएगा और सही सुंदर मुहूर्त आमे देखि पारुथिले न्यूज 8 माध्यम रे आमे आपनको सीधा सड़क चित्र देखाउथिले। वर्तमान आपण सही चित्र को मध्य आपनको टेलीविजन स्क्रीन देखि पारुछंती किभଳି भाबरे INSAT-3DS सैटेलाइट रो गति रहिछि। यह जे उद्देश्य यात्रा करिछि आमे आशा करिबा इसरो रो एही यात्रा सफल हेउ। इसरो इतिहास रे से स्वर्णिम अध्याय रो एक नुआ जुगर आरंभ हेउ। तेबे आपण माने एही चित्र को सीधा सड़क भाव में न्यूज 8 माध्यम रे देखि पारुथिले। जोड़े रही थांतु न्यूज 8 सहित आमे आपण को टेक्निक खबर सविशेष भाव में प्रदान करिवु। आगामी समय रे किछि भी खबर आसिला जहाँ आपण पाखरे पहुँचवा निहाती आवश्यक। आमे निज आड़ू प्रचेष्टा जारी रखिबु। न्यूज 8 ओडिया माध्यम रे आमे आपण पाखरे टेक्निक खबर नहीं खूब शीघ्र पहुँचबू। धन्यवाद। And we have a successful mission of GSLV-F14 INSAT-3DS. Hearty congratulations to Team ISRO and users from the Ministry of Earth Sciences.
Do continue to stay tuned for the address by Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. हम अब आपको ले चलते हैं चेयरमैन इसरो के भाषण के लिए। Okay. I'm very happy to announce the successful accomplishment of the mission GSLV-F14 INSAT-3DS. The spacecraft has been injected into a very good orbit. The injection conditions were as expected, and we also noted that the vehicle has performed very, very well. And congratulations to everybody who has been part of this mission, the team that built the INSAT-3DS for the Ministry of Earth Science from the satellite centers, and also the launch vehicle teams who built the GSLV-F14 for this mission. My greetings and congratulations to everybody for this accomplishment. And INSAT-3DS is the next generation weather satellite with improved capability over the existing INSAT series, which is there in orbit, INSAT-3D and INSAT-3DR. And this will augment the capability of observation of various atmospheric parameters that leads to the information related to the weather and the climate. And also it gives a lot of data in terms of the data collection platform as well as distress satellite terminal related operations as well. So let me congratulate the team who built the payloads, the satellite, and also the launch vehicle for this excellent mission this year. Let me hand over to the mission director, Sri Tommy Joseph. Thank you, sir. Respected Chairman ISRO, Senator Heads, all the gurus, and all the colleagues from all ISRO centers. So the naughty boy has now become and matured as a very obedient and disciplined boy. And so like PSLV, GSLV has also become a very robust vehicle for ISRO. So I congratulate and salute all the ISRO family members on this occasion. So GSLV-F14 vehicle, after the majestic liftoff, it has injected INSAT-3DS or satellite into the precise injected orbit. So this is the 10th mission of GSLV with the cryogenic indigenous stage actually. So in this mission, compared to the previous mission, around 50 kg payload he was increased actually. So this mission is possible only by the hard and dedicated work of all the ISRO employees. So I thank Chairman ISRO, all the secretaries for their consistent and continuous guidance, support and encouragement. And I also thank Chairman, alternate Chairman MRR, Chairman Lab, Chairman FRLV, alternate Chairman, and all the review forums for the excellent review, comprehensive review. And also I thank all the SDAs, System Development Agencies, and the reliable SR agencies all over the ISRO centers, across all the centers, for the excellent delivery of all the timely delivery of all the subsystems and vehicle systems, and also the SR agencies for the critical quality assessment. And I also thank the industrial partners who have delivered very high reliable vehicle systems. I compliment our family members, very loving family members, who have supported indirectly
for this mission. I also thank the all National Eminent Committee experts who have given us very valuable guidance, and all the gurus and pioneers here. I am extremely happy to thank actually the project executives, mission executives, and the vehicle team led by Vehicle Director Karthikeyan and Associate Vehicle Director Gladwin, and also for the excellent teamwork. And also I thank the satellite team led by Imtiaz Ahmed, and I wish all these subsequent operations also very success. I am extremely grateful to Chairman ISRO and the higher management for giving me this opportunity, and also the responsibility of leading this project. We are eagerly looking for the next prestigious GSLV mission, an international collaboration with the NASA for the NISR launch. I wish all the very success for all the future endeavors and missions of ISRO. Once again, I thank each and everyone, and also the Almighty for this magnificent mission. Thank you. Jai Hind. We are also very happy to announce the deployment of the solar panel of the satellite. And before we move further, I request the Space Radar Director, Sri Imtiaz Ahmed, for his words. मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है. Respected Chairman ISRO, Center Directors, my senior colleagues, and all fellow ISROites, very good evening to all of you. First of all, my hearty congratulations to all ISRO team members and the family members for a marvelous launch. In fact, firstly I should thank GSLV team for precise injection orbit and the 4-meter payload fairing, as well as the maximized lift of mass. In fact, we could not have asked better than this, perhaps. In fact, the 4-meter payload fairing is extremely important for the satellite community, as it provides larger flexibility for building larger spacecrafts. In fact, INSAT-3DS is a live example where a lot of improvement could be achieved due to the larger fairing. Now, INSAT-3DS is essentially a third-generation meteorological satellite built around I2K platform with imager, sounder, DRT, and SAR payloads. The payload systems are designed for monitoring land, ocean, its environment, as well as the vertical profiling of the atmosphere for the weather forecasting and the disaster warning systems. Now, also, the payload includes data collection and dissemination capability, as well as satellite-added search and rescue services with the global receive coverages. Now, while INSAT-3DS will provide continuity of services for INSAT-3D and 3DR, the payloads of INSAT-3DS has been significantly enhanced, as Chairman has already told, and the enhancement is in terms of configuration, content, and capability, resulting into improved radiometric accuracies, blackbody calibration, and the increased imaging throughput. Now, already INSAT-3DS is on its way to the destination. Chairman sir mentioned that the solar panel is already deployed. A series of orbit testing maneuvers will be performed over next few days, followed by in-orbit testing and the commissioning of the spacecraft. On this joyous occasion, I would like to thank Chairman ISRO, Center Directors, my senior colleagues, and review forums for their unstinting support throughout. The celebration will only be meaningful and complete with my team members, engineers, technicians, and administrative staffs who toiled hard to make this wonderful satellite. Before I end, I wish to acknowledge the personal sacrifices made by the team members and their families, which made today's triumph possible. I am sure this satellite will be another colorful feather in India's meteorological satellite constellation, saving the life of millions and properties worth billions. Thank you all. Jai Hind. With this mission,